So, welcome back for the new module. I think this is the fourth module for the same chapter, that is number system or real numbers, right? Now, suppose if I ask you how many natural numbers are there between say 5 and 6. मतलब 5 और 6 ये जो नेचुरल नंबर है इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली विल से कि भाई 5 और 6 के बीच में कोई नंबर है ही नहीं. सो वी डोंट हैव एनी natural numbers between 5 and 6, for that matter 10 and 11 also, right? But suppose if I ask you how many natural numbers are there between 4 and 6, there is one natural number, that is 5, right? Same is the case with whole numbers and integers. Though consecutive natural integers या whole numbers के बीच में कोई भी दूसरा नेचुरल होल नंबर या इंटीजर नहीं हो सकता है. बट सपोज इफ आई आस्क यू हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, फॉर दैट मैटर टू कॉन्सेक्यूटिव रैशनल नंबर्स. कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? तो we can have infinite number of rational numbers between any two rational numbers. Say for example, 2 is a rational number, 3 is also a rational number. हम बात कर रहे हैं दो rational number के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं. So 2 and 3 के बीच में we can have how many rational numbers. Natural number तो हो नहीं सकते, whole numbers नहीं हो सकते, integers नहीं हो सकते हैं, लेकिन rational numbers कितने हो सकते हैं? So between 2 and 3 there are infinite number of rational numbers. अब आप कहोगे कि how is it possible? Say 2 is less than 2.1, right? 2.1, 2.2, 2.3 करते 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 2.9 और उसके बाद में आएगा 3. Definitely all these numbers 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 तक जो है they are less than 2, they are greater than 2 but less than 3. 3 से बड़े हैं लेकिन 3 से छोटे और 2 से बड़े हैं, राइट? नाउ अब आप कहोगे कि यार 2.1, 2.2, 2.3 ये रैशनल कैसे हुए? डेसिमल एक्सपांशन में दे आर टर्मिनेटिंग टाइप, है ना? 2.1 के बाद में कोई नंबर नहीं है, इट्स सिंपली 2.1, 2.2, 2.3. सो टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशंस, ये सब रैशनल नंबर्स हुए, राइट? अभी इनफिनिट कहाँ पे हुए? इधर से हम गिन सकते हैं 1, 2, 3 ऐसे करते करते गिन सकते हैं हम, है ना? तो मैं कहता हूँ कि 2.2 एंड 2.3 लीजिए, 2.2 एंड 2.3 के बीच में कैन आई राइट दिस 2.2 as 2.20 एंड 2.3 as 2.30? लिख सकते हैं वैसा, राइट? सो 2.20 के आगे वी कैन हैव 2.21, 2.22, 2.23 करते 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 2.29. Alright? So all these numbers, they are greater than 2 but less than 3. ये और numbers हो गए, ये numbers हो गए. जैसे मैंने दो consecutive numbers लिए हैं, we can have infinite numbers between this also, this also, this also, this also, something like this one. अगर मैं ऐसे करते जाऊं तो इतने सारे नंबर्स होंगे कि जिनको हम गिन नहीं पाएंगे हम, राइट? सो बिटवीन टू consecutive two consecutive integers we can have infinite number of rational as well as irrational numbers, right? तो एग्जाम में आपको ऐसे पूछेंगे
कि भाई 2 and 3 के बीच में राइट सम 5 रैशनल नंबर्स। तो एक तरीका मैंने आपको भी बता दिया कि कैसे लिख सकते हैं हम करके, है ना। So there are different methods out there. Get your point? So 2 and 3 के बीच में we can write plenty of numbers like 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. All these numbers are between 2 and 3. Right? Suppose दो integers के बिना छोड़ के तो आपको बोला गया है कि 4/3 and 7/3 के बीच में कोई भी 3 रैशनल नंबर लिखिए करके। तो वी कैन हैव 4 के बाद में 5, बाद में आएगा 6, दैट मीन्स 5/3, 6/3, ऐसे करते करते जा सकते हैं हम, राइट। सो वी कैन राइट सम रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/3 एंड 7/3। अभी आई कैन राइट 5/3, 4 के बाद में 5 आता है ना, डिनोमिनेटर सबके सेम हो जाएंगे यहाँ पे, 6/3 ऐसा। But we have got only 2 numbers here. Suppose if you want to write some more numbers between say 5/3 and 6/3. Say 5/3 and 6/3 के बीच में suppose करो कि आपको 3 rational numbers लिखने हैं। Since their denominators are same, right? तो जितने हमको नंबर्स लिखने हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको पूछा राइट 3 नंबर्स बिटवीन 5/3 एंड 6/3। एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताता हूँ मैं कि कैसे लिखना है करके। Say they ask us to write 3 numbers. So what is 3 plus 1? It is 4, right? So you multiply the numerator and denominator by 4, numerator and denominator by 4. 4 क्यों? Because we want to write 3 more rational numbers between 5/3 and 6/3. This is possible because their denominators are same. इनके denominators are same. So multiplied by 4 and divided by, multiplying the numerator and denominator by 4. Here also 6 into 4 upon 3 into 4. So 5 4s are 20, 3 4s are 12, 6 4s are 24, 3 4s are 12. Denominator में चेंज नहीं हुआ, देखो सेम डिनोमिनेटर्स हुआ, बट इसमें गैप आ गया, देखो 20 and 24, यहाँ पे गैप नहीं था 5 and 6। तो ये गैप लाने के लिए हमको ये मेथड करना पड़ा। अगर आपको पूछा है कि 3 नंबर्स लिखने हैं तो 3 + 1 4, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4। अगर मैंने आपको बोला होता कि राइट 4 नंबर्स बिटवीन 5/3 एंड 6/3, then 4 + 1 5, so multiply the numerator and denominator by 5, numerator and denominator by 5, right? So here यहाँ पे ये क्वेश्चन में since we want 3 numbers, 20 के बाद में 21/12, 22/12, 23/12. All these numbers lie between 20/12, which is same as 5/3, है ना? Between 6/3, which is same as 24/12, right? समझ में आया? We'll take one more example. Suppose आपको बोला हुआ है write some numbers between say 7/6 and 8/6. Now दोनों के denominators are same, right? As far as integers are concerned, 7 और 8 के बीच में कोई भी integer नहीं है, but still we are supposed to write say 4 numbers between 7/6 and 8/6. So since they have asked us for 4 numbers, 4 + 1 is 5. So multiply the numerator and denominator by 5. So this will be 7 into 5 upon 6 into 5. Here it will be 8 into 5 and 6 into 5. 7 5s are 35 upon 6 5s are 30. Here it will be 8 5s are 40, 6 5s are 30. Now 35/30 and 40/30 के बीच में 35 के बाद में 36, 37, 38, 39/30. Getting? So this will be 36/30, 37/30, 38/30 and 39/30. All these numbers
lie between 35 upon 30, which is same as 7 upon 6, between 40 and 30, which is same as 8 upon 6. समझ में आया? Now this is possible because दोनों के denominators were same. Now आपको एक doubt ऐसे आएगा कि अगर denominators are not same, if denominators are not same, then what is the procedure? Make the denominator same and proceed as follows, right? Say for example, आपको बोला गया है कि 3 upon 2 and 7 upon 4 के बीच में some numbers, right? Write some numbers between. सबसे पहले हम देखेंगे कि this fraction बड़ा है कि ये fraction बड़ा है. 4 3s are 12 and 2 7s are 14. So definitely this fraction is greater. Now here what we find is that the denominators are different here. So first of all, make the denominators same. इनके denominators को हम same करेंगे. कैसे करेंगे देखो? 2 and 4 का LCM, the LCM of 2 and 4. It is 2 1s are, 2 2s are, 2 1s are, that is 2 2s are 4. So we will make the denominators 4. So already यहाँ पे 4 है, we'll have to make it 4. So to make it 4, I'll have to multiply the denominator by 2. तो numerator को भी 2 से multiply करना पड़ेगा. So 3 2s are 6 upon 4 and this is 7 upon 4. Now the denominators are same. इसके बाद में procedure क्या रहेगा? The usual way जो हम कर रहे थे. How many numbers we want? Say 5 numbers. So 5 plus 1, 6. Multiply the numerator and denominator by 6. Numerator and denominator by 6. So it will be 6 into 6 upon 4 into 6. Here it will be 7 into 6 upon 4 into 6. So 6 6 are 36 upon 4 6 are 24. Here 7 6 are 42, 4 6 are 24. Now denominator same है, right? 36 के बाद में we get 37 upon 24, 38 upon 24, 39 upon 24, 40 upon 24, 41 upon 24. So all these numbers, they lie between 36 upon 24, which is same as 3 upon 2, and all these numbers are less than 42 upon 24, which is same as 7 upon 4. See here, don't get confused. ये number जो हमको क्वेश्चन में पूछा था 3 upon 2 and 7 upon 4, क्या ये number और ये number same है? क्या ये number और ये number same है? Yes, we can check it. 12 2s are and 12 3s are 3 upon 2. Here किस में जाएगा? 6 4s are 24, 6 7s are 42, 7 upon 4. समझ में आया? So this is one type of question generally they ask in the exam, to write certain rational numbers between given two rational numbers, right? So if it is say negative numbers, so why should we worry about the negative also? Say minus 3 upon 2 and minus 7 upon 4, right? Now यहाँ पे छोटा सा एक आपको corrections क्या करना पड़ेगा? Not correction, rather एक arrangement करना पड़ेगा. Now 4 3s are 12 and 2 7s are 14. So this comes out to be minus 12 and this is minus 14. So when the number is associated with certain sign, negative sign, right? तो जिसका mod, जिसका modulus, जिसका magnitude बड़ा है, that is छोटा. That means minus 14 इधर आएगा and minus 12 इधर आएगा. Minus 14 मतलब वो वाला minus 7 upon 4 and minus 3 upon 2. This is greater than this one, right? Now इसके बाद में procedure will be same. कैसा रहेगा? Make the denominator same. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है. LCM of 4 and 2 is 4. So we'll have to first of all make the denominator same. So multiply the numerator and denominator by 2 so that it becomes, I'll write it here now.
So minus 7 upon 4 as it is, and here it will be minus 3 upon 2. So I'll have to make it 4. So multiply this by 2 and this by 2 so that the denominator becomes 4. So this is minus 7 upon 4 and minus 6 upon 4. Now, how many numbers? Suppose if I ask you to write 3 numbers. So 3 plus 1, 4. Multiply and divide. Multiply the numerator and denominator by 4. Same thing there. So minus 7 into 4 is minus 28 upon 4 fours are 16. Here it will be minus 6 fours are 24, 4 fours are 16. Alright. Now 28 and here it is 24. So you have 24, 25, 26, 27, 28. Hai na? So 20, or else you can decrease from here. So minus 27 upon 16, minus 28, 27 ke baad 26, sorry, upon 16, minus 25 upon 16, and this is 24 upon 16, right? 28, 27, 26, 25, 24. 3 numbers are there, right? So if it is a negative number, no need to worry. The process, the method remains the same, right? So आज के इस छोटे से मॉड्यूल में हमने we have seen how to find rational numbers between given rational numbers. Generally, this type of questions are asked in the exams, right? Now, इसके बाद में I will just have small modules, exercise based modules. So अभी तक हमने जो कुछ किया हुआ है, I want you people to complete this exercise. जो topic हमने cover किया है, right? And everybody will be just not showing me the whole of the homework. Those people who completes their homework, after some time we will be sending the links to only those people who will be showing their homeworks, right?